Give your attendance. Okay. Bishu. Okay. Paragraph 6. Open your book. Paragraph 6. Okay, Samal. Paragraph 6. The missile man of India. Paragraph 6. After spending 19 fruitful years in the ISRO, Kalam returned to the DRDO to head us in the ISRO. Kalam spent 19 years, which was successfully 19 वर्ष कलाम कौन करते ना सफलतार सह इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो रे काम कर सारा पर रिटर्न टू द DRDO टू हेड द कंट्रीज इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम से पूरे DRDO को पुणी रिटर्न कले IGMDP रे से हेड इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट रे हेड एक रहिले के कलाम Here he took a leading role in the development of India's missile. से IGMDP रे तांकर मुख्य रोल रहिला कौन करिया पाई ना इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया's missile and nuclear weapons program. इंडिया रा जो मिसाइल्स थिला इंडिया रा जो डेवलपमेंट ऑफ मिसाइल इंडिया's मिसाइल आउ जो रहितला न्यूक्लियर वेपन आणविक अस्त्र ये सबरो डेवलपमेंट प्रोग्राम रो दायित्व थिला कलामकर मेन रोल थिला कोठी ना IGMDP रे द प्रोग्राम वाज वेरी सक्सेसफुल से प्रोग्राम गुडी को बहुत सक्सेस होइतिला इट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ 4 मिसाइल्स नेमली पृथ्वी त्रिशूल आकाश एंड नाग चारिटा मिसाइल जो थिला से चारिटा मिसाइल को सक्सेसफुली डेवलप करितले के कलाम से चारिटा मिसाइल रो ना कोन थिला पृथ्वी त्रिशूल आकाश एंड नाग व्हिच were developed by Kalam successfully. The success of the program made him extremely popular in the country. ये जो सफलता पाइतिले यार सफलता पाई this success program made Kalam popular in the country. कलाम को ए कंट्री रे पॉपुलर करिवार ये सफलता थिला. Hereafter he was popularly called the missile man of India. सेहिति पाई ता परठारु तांको कुआगला मिसाइल मैन ऑफ इंडिया. ए चारिटा मिसाइल को से सक्सेसफुली डेवलप करितबारु को चारिटा ना पृथ्वी त्रिशूल आकाश एंड नाग these 4 missiles were developed by Kalam successfully. So that is why hereafter Kalam called as the missile man of India. Okay, बुझो जी. In para 7 in 1998 as the chief of the DRDO, Dr. Kalam supervised the
Pokhran 2 nuclear test for which he had camped in Rajasthan's Thar desert for over a fortnight in 1998. 1998 रे जेतेबेले कलाम डीआरडीओ रो चीफ भाव में सुपरवाइज करिया जाइथिले कोठी राजस्थान पोखरान 2 रे जो यूनिट अच्छी डीआरडीओ रो से यूनिट की जाइथिले सुपरवाइज करिया पई कौन सुपरवाइज करिया पई ना न्यूक्लियर टेस्ट को फॉर व्हिच ही है कैंप इन राजस्थान थर डेजर्ट राजस्थान जो थर मरुभूमि अच्छी थर डेजर्ट से कैंप पकईक रहिले केते दिन पई ना फॉर ओवर ए फोर्टनाइट केते 15 डेज 2 वीक्स 15 डेज पूरा से थर डेजर्ट रे कैंप करके रहिले कौन टेस्ट करिया पई न्यूक्लियर टेस्ट पई द टेस्ट वाज ह्यूजली सक्सेसफुल जो टेस्ट थिला न्यूक्लियर टेस्ट पोखरान डे से पूरा बहुत मात्रा रे सफल हैला अकॉर्डिंग टू डॉक्टर कलाम कहवा अनुसार इट वाज ए डिफाइनिंग मोमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री कहलिए आम देशर गोटे डिफाइनिंग मोमेंट ये जो मुहूर्त गोटे डिफाइनिंग मोमेंट से समय से कही जो सक्सेसफुली न्यूक्लियर टेस्ट पोखरान डे करते आफ्टर सक्सेस कलाम said to the country or nation it was a defining moment in the history of our country some years after the test ab kichi test hobar kichi barsha pare the missile man of India Kalam recollected today I remember the hot day of 1998 at Pokhran 53 degrees Celsius से जो किसी सम इयर्स आफ्टर द टेस्ट हो सारा पर से दिन को जो डे रहीला से डे जिते से जो 1998 से जो हॉट डे कथा मन पड़गला जोटा कि 53 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर थिला when most of the world was sleeping जिते बड़े वर्ल्ड रो अधिकांश वर्ल्ड कंट्री गुड़िक शोईले इंडियास न्यूक्लियर एरा इमर्ज सेते बड़े इंडिया रो ये जो आणविक समय आरंभ है जुग आरंभ है जिते बड़े सबू वर्ल्ड रो बहुत गुड़ाए कंट्री शोई पड़ी सेते बड़े इंडिया रो न्यूक्लियर एरा आरंभ है एक कथा कलाम नेशन को कही तापरे पारा 8 Dr. Kalam was appointed as the chief scientific advisor to the Prime Minister and the Secretary of Defense Research and Development Organization from July 1992 to December 1999. Dr. Kalam was appointed as the chief scientific advisor. माने चीफ साइंटिफिक एडवाइजर भावे कलाम कोट अपॉइंटेड हेले ना टू द प्राइम मिनिस्टर एंड द सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ रो सेक्रेटरी को साइंटिफिक चीफ एडवाइजर भावे अपॉइंटेड हेले आ प्राइम मिनिस्टर को मध्य साइंटिफिक एडवाइस दवा मध्य से प्राइम मिनिस्टर को पाखरे मध्य चीफ साइंटिफिक एडवाइजर भावे अपॉइंटेड हेले व्हेन Kalam was appointed as the chief scientific advisor to the Prime Minister and the Secretary of DRDO from July 1992 to December 1999 for his greatest contribution to the field of space. स्पेस क्षेत्र में बहुत बड़ कंट्रीब्यूशन योगदान थिबा जोगु स्पेस डिफेंस एंड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी रे तांकर कंट्रीब्यूशन भास्ट कंट्रीब्यूशन थिबा जोगु कलाम करो this eminent scientist was honored with the Padma Vibhushan in 1981 से महान एमिनेंट साइंटिस्ट को पद्म विभूषण भावे 1981 डे ऑनर करागला एंड पद्म विभूषण एंड द पद्म विभूषण इन 1990 सब बेले मन रखि डेफिनाइट आर्टिकल दी लगे जते रिवार्डर ना पूर्व द पद्म विभूषण
द पद्मभूषण, द भारत रत्न, द नोबेल प्राइज, ता पूर्व डेफिनाइट आर्टिकल किए लगे द पद्म विभूषण इन 1990, द पद्म भूषण इन 1981, and the nation's highest civilian honor, the Bharat Ratna, in 1997 by the government of India. तले पद्म, द पद्म भूषण, द पद्म विभूषण, द भारत रत्न, these three honorary award gave to the Kalam. It was 27th July 2015. यह समय थिला केते 27th July 2015. Dr. Kalam was delivering a lecture in Shillong. Shillong रे से तंकर निजर स्पीच दोतला बेले 27th July 2015 डे during the course of his lecture he collapsed. सही समय से कौन है कोलैप्स हो गए, डेथ कर गए. ही वाज इमीडिएटली he collapsed, immediately taken to a hospital. He had suffered a massive cardiac arrest. जेतले से कोलैप्स हो कि पड़ी गले सेतले तमको इमीडिएटली हॉस्पिटल ने गला. सेतले डॉक्टर देखले ना कलाम हैड सफर्ड ए मासिव कार्डियक अरेस्ट. कार्डियक अरेस्ट माने कोन रे हार्ट अटैक जोटा कहते से कहते कार्डियक अरेस्ट. हिज डेथ वाज ए ग्रेट लॉस ऑफ आवर कंट्री. तांकर डेथटा आम कंट्री पाई गोटे बड़ लॉस होता. डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम विल बी एवर रिमेम्बर्ड फॉर हिज डेडिकेशन. डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सबुदिन चिरस्मरणीय हो रहिबे तांकर ये डेडिकेशन पाई, ये समर्पण भारत को बा आम देश को तांकर ये समर्पण पाई से चिरस्मरणीय हो रहिबे. डिवोशन एंड सेल्फलेस सर्विस टू द नेशन. आउ निस्वार्थपर सेवा देश को जोगई पर्टिकुलाली से कहुई एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया. बुझेगा. आउ कलाम के विषय लिखाई से प्रेसिडेंट भी होते कौटी इंडिया प्रेसिडेंट थे. ओके तापरे किसी मीनिंग गुड़िक देख. डिस्टिंग्विश्ड. The meaning of distinguished is very successful and admired by people. Intimately माने very closely, अति अंगांगी भावे जड़ित बा अंतरंग भावे जड़ित जोटा कहते इंटिमेटली. इनवॉल्व माने कंसर्न बा टेकिंग पार्ट. जो माने पूरा इनवॉल्व रहती कहते इनवॉल्व. कंसर्न बा टेकिंग पार्ट जो माने से निजे संश्लिष्ट था. Civilian not related to armed force. Space empty area in the sky. महाकाश आम जोटा कहते शून्य पथ स्पेस. मिसाइल a weapon that is sent through the air and that explodes when it hits the thing it is aimed at. से जो थिंग्स को एम करी पठा जाए ये गोटे वेपन मिसाइल से हिट कला से एक्सप्लोड हो जाए, से ब्लास्ट कर जाए, से कहते मिसाइल. रामेश्वरम. रामेश्वरम तो गोटे टाउन नेमिंग वर्ड, तार किसी मीनिंग न थाए. टाउन ये पंबन आइलैंड इन तमिलनाडु. इमाम ए रिलीजियस मैन हु लीड्स द प्रेयर इन ए मस्क. जे मस्जिद रे प्रेयर दायित्व नियंती ताको कहते इमाम. कलाम्स फादर वाज ऑल्सो इमाम ऑफ मस्क, लोकल मस्क. मस्क जान ए बिल्डिंग इन व्हिच मुस्लिम्स वर्शिप. जो मस्जिद जोटा कहते मुस्लिम संप्रदायर लोक मैंने पूजा करते से कहते मस्क. फेरी ए बोट दैट कैरीज पीपुल. लोक मान जो बोट कैरी करे ताको कहते फेरी. पिलग्रिम ए पर्सन हु ट्रावेल्स टू ए होली प्लेस फॉर रिलीजियस रिजन्स. जदि जो लोक मैंने रिलीजियस रिजन जो धार्मिक कारण गोटे जगह को जाते बुलवाक से आम तुमको पिलग्रिमेज. नेक्स्ट ancestor, a person in a family who lived a long time ago. जे आमर पूर्वज जो माने आमर पूर्व पुरुष थिले
जो मैंने आमर बहुत ग्रांड फादर ग्रेट ग्रांड फादर से फादर सी सब होती आंसेस्टर्स। तापर आस कि क्वेश्चन आंसर ऊपर डिस्कशन कर। हु वाज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम? Where was Dr. APJ Abdul Kalam born and when? Who were his family members? Very easy. What was his mother? एको करि परिबो बुझौछि अलेख सामल आउ ये विशु बुझि पाछ? Where was Kalam born? Write down. Where was Dr. APJ Abdul Kalam born? Where was Dr. APJ Abdul Kalam born? Kalam was born. Kalam was born in a Tamil Muslim family at Rameswaram in the state of Tamil Nadu. Okay. When Kalam was born? Kalam was born on 15th October in 1931. 15th October in 1931. Who were his family members? Who were his family members means who were Kalam's family members? No, 1931 wrong. 15th October 1931. October means 10. Who were his family members? Kalam's family members were his father Jainaluddin and mother Asyama, and he has 3 brothers and 1 sister. Among 4 brothers, he was the youngest. Among 4 brothers and 1 sister, he was the youngest. से सबुठ फैमिली कौन थे? सबुठ छोट थे के कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, where did he get his primary education? Where did he get his primary education? Where did he get his primary education? Where did Kalam get his primary education? Kalam केउंठारे तांकर प्राइमरी एजुकेशन पाइथिले? Kalam got his primary or elementary education at Ramnathpuram. At Ramnathpuram. Who was Kalam's science teacher? Who was Kalam's science teacher? Who was Kalam's science teacher? Kalam's science teacher was Shiva Subramaniam Iyer. Shiva Subramaniam Iyer. What problem did Kalam face for his admission into engineering? What did Kalam face for his admission into engineering? Okay, कल डिस्कशन हो।